Very, very good morning to all of you. So you all are fine, comfortable. So today we will be, yeah. So today we will be discussing on BRS, Bank Reconciliation Statement, and how to calculate DA on tool. Okay. So time is very short. Theoretical portion on BRS has already been covered in the previous session. Some material also I have shared through the group. So I do not think any time we should spend on discussing it theoretically. Okay, it's fine. Is it fine? So straight away, what is related to BRS that I will be discussing and how to prepare bank reconciliation statement easily. That will be discussing today. So I'm not going to discuss it theoretically. Okay. So generally, those again, before the commencement of the session, I would like to mention one thing. This session is particularly meant for candidates of non-commerce background. Okay. The candidates of commerce background, they may be knowing or they may be in a position to solve the question on BRS. But my objective here is to make the session or make the BRS problem simple for the non-commerce candidates. Okay, so the candidates of commerce background, you please bear, and for you also it will be like refresher, revision type of things. Okay, you see, when BRS means basically it is related to cash book and bank reconciliation statement means our main cash book and the statement of the bank. For example, one institute is having only one account. You can consider. We are having only one account. So what is every month we are closing the cash book. So what is your closing balance at the end of the month in the cash book? And what is the closing balance available at our bank statement for the same account? Okay. That means every time the cash book balance should tally with the balance available with the passbook. If everything goes smoothly, the balance available at cash book will tally with the balance available at the bank statement. But there are some situations, there are certain conditions where there will be difference in the cash book balance and bank statement. Okay, so what are the conditions? What are the different conditions? You see, generally, what are our activities with the bank? What do we do with the bank? What are our activities related to bank? First, we may have to deposit checks, or we may have to deposit any draft, whatever we have received. We may issue check. We may open letter of credit, LC. Bank may debit certain charges from our account, or bank may credit interest to our account. So these are the transactions. You see, mainly these are the things
directly, or so many things are there which are also indirectly related to this. First of all, we will discuss issue of check. First is second one I am talking, issue of check. Okay. Whenever we will be issuing check to any supplier or anyone, we will be issuing check. Issuing check means that amount will be paid from our account, from our bank account. So whenever we will be issuing check, immediately what we will do, we will write in the cash book as by payment made to Messrs. ABC towards this for this, means again cash book summary. In the summary way, cash book is like whatever amount we are receiving are recorded in the receipt side, our left hand side, cash book and register, big register. Our receipt side is our left hand side and payment is our right hand side. Okay. So whatever we will be receiving throughout the month or year will be recorded in our left hand side, receipt side. And whatever will be paying or issuing will be recorded in our right hand side of the cash book. So this is the main things you just remember. Right hand side is the payment side. Left hand side of the register. Cash book is a big register. So left hand side of that register is the receipt side. Right hand side is the payment side. Okay. Whenever we will be issuing any check. We will be issuing check means why we will be issuing checks means some amount is to be paid to someone. Something is to be paid to someone. So against one purchase order we will issue one check. Whenever you will be issuing the check, so we will write the payment side of the cash book in the right side of the cash book. In the that summary, in that narration, we can write in a summary for this by means cash book receipt side, the narration of two is written as we are receiving, and the payment side by. So we are making payment to Messrs. ABC or whosoever it may be. The name is to be written. The purpose of the payment is to be written. Amount also is to be written. Okay. Whenever we will be writing that entry in our payment side of the cash book, what does it mean? It means our cash book balance gets reduced to that extent. If you are issuing check of rupees 1 lakh and writing that entry in the cash book, so immediately that means whatever balance we are having, after issuing that check, our cash book balance will be reduced. Okay? Cash book balance will be reduced. You just remember, you just listen it carefully. Our cash book balance will be reduced to that extent, to the extent we are issuing check. But unless and until that check is deposited into our bank account and that proportionate amount is deducted from our account, our bank statement will not show that amount, will not show a decreased balance to that extent. Means what I mean to say is that no doubt we have recorded check payment of rupees 1 lakh in our cash book. Our cash book balance has been reduced by 1 lakh, but our bank statement or balance at passbook, bank statement means balance at passbook has not been reduced by that 1 lakh. Why? Now the check has not been deposited for payment, or if it is also deposited, it has sent for collection. It has not been, bank has not made any payment against that check. So up to that moment, the checkbook, your bank statement will show balance at the higher side, whereas the cash book will show something less figure. So it is check issue. Achha. One more is check deposit or draft receipt. For example, we have received check from one supplier, maybe EMD, security, whatever it may be. We have received check from someone. We have received. Whenever we will be receiving check or draft,
So that amount, that check or draft is to be recorded in our receipt side of the cash book. Receipt side. Okay. Our receipt side of the cash book, if it will be written, means our cash book balance will be increased. Cash book balance will be increased. But passbook balance is not increased. Passbook balance will be increased only when we will deposit the checks into the bank. Again, the bank will collect the proportion that check amount from that supplier or from the account of that person. Then only our bank available balance of the bank statement also will increase. But if it is not collected, if the check amount is not collected by the bank, again the bank though again will be writing in our cash book, our receipt statement will be increased, but bank statement will not be increased, bank balance will not be increased. So this is the scenario. Okay. Again, it may so happen that bank may directly debit certain amount as bank charges or any check issuance charges, draft collection charges, whatever it may be. Bank may directly debit the amount from our passbook. Whenever bank will debit the amount from our passbook, so immediately the passbook balance will be reduced. Immediately passbook balance will be reduced. But as we do not have any idea of these bank charges, so we will not make entry of this in our cash book. This bank charges, we will not make any entry because we do not have any information. This again, what bank is to do? Bank has to give an advice or information to us that falana this the amount of rupees this has been deducted towards bank charges. So then only on the basis of that letter, on the basis of the advice, we will make entry. Again, in bank charges means our balance will be reduced. Means it is like a payment thing. So it has to be recorded in the payment side of the cash book. Similarly, interest credited means it may so happen that bank may directly credit certain amount towards interest in our bank statement. In that case, our passbook balance, bank balance will be passbook balance, bank balance, all are same thing. Our bank balance or balance at passbook, if interest is credited by the bank, it will be increased, it will be enhanced, it will be more. Passbook balance will be more, whereas cashbook balance will not be means there will not be any entry of that amount in our cash book as we do not have any idea regarding the interest credited by the bank. In that case, the bank has to give information to us. So that means whatever transaction we are doing directly, like we are issuing check, we know this, we'll make entry in our cash book. Whenever we are depositing check into bank, we also know these things, we'll make entry in our cash book. But if any transaction is directly done by the bank, like bank deduct some bank charges, credit some interest, in that case, as we do not have any idea on that, so we will not be in a position to make entry in this type in our cash book. So what will happen? Now there will be a difference, there will be a discrepancy in the balance of the cash book and in the balance of the passbook, cash book and passbook. So that is why we need to prepare the bank reconciliation statement. By preparing the bank reconciliation statement, so we can very well identify, we can very well know what are the discrepancy. If you tell me what is the easy way of preparing the BRS, what is the very easy way of preparing the bank reconciliation statement? This is the month of November. You take the bank statement of any account, any of your account of the institute for the month of October, from 1st October to 31st October, you first take the bank statement. Then you might have recorded all your cash transaction or whatever transaction you have done at your cash book. So what you have to do, you go on matching all the transactions of the cash book with that of all the transactions of the passbook. In the cash book, there are so many debit entry, there are so many payment entry, so many receipt entry also. So similarly, also bank statement will be there. So what you have to do,
you have to match all this entry. What is the entry? What are the total payment entry in the cash book and total payment entry in your bank statement? You match all those. Certainly, all the things will be matched. Certainly, again, there will be some unmatched or transactions. Unmatched transaction means like whenever this situation will be there, there will be some unmatched transactions. Like we have issued check, we have entered in the cash book, but that check we have issued to a particular person. That person has not deposited in that check into our bank account or his bank account. So that check amount has not been credited or has not been debited, means it has not been paid from our bank account. So that is why we have made entry in the cash book balance has been reduced, but bank book balance or a bank statement is at more side. So the easy way of preparing BRS is you go on matching all the transactions, all the receipt side entry of the cash book with the receipt side of the bank statement, all the payment side entry of the cash book, again payment side of the statement. So there will be some unmatched transactions. Maybe certain transactions may be there, maybe 10, 20, whatever it may be. Those transactions of the cash book do not match with the bank statement, or transaction of the bank statement do not match with the cash book. In that case, you have to search, you have to find out what are these. For example, if certain amount we have written in the cash book, but that is not available in the bank statement. We have written in the cash book, but not available in the bank statement. What does it mean? If we have written in the payment side, that means we have issued certain check to someone, but that check has not been paid from our institute account. So that is why in the bank statement, this entry is not there. Again, if some receipt entries, some entries not matching with the bank statement, that means again we have deposited some check or draft, but that amount again has not been credited into our bank account. That is why there will be discrepancy. Again, bank statement, you can find that directly bank may deduct some charges, like some interest, something may deduct, that amount may be means debited from our bank statement, means amount will be less, but passbook no entry will be there. There will be no entry. Why? Now we do not have any information on this. So if this thing will happen, then what we will have to ask bank, what are these entries? Why you have deducted 500 rupees on this date? So bank will tell that, okay, this is regarding these charges, or this is regarding this interest we have credited. So this is the very fundamental way of preparing the bank reconciliation statement. These are all these things I have discussed. This again also it is theoretically, but very quickly I will cover. What is the dangers if we do not prepare the BRS? If we do not prepare BRS, what will happen? There may be a question also in your exam. So what is the consequences of not preparing the BRS? Or what is the problem if you do not prepare the BRS regularly? If you do not prepare the BRS, non-detection of the degenerate check. What is non-detection of degenerate check? Again, degenerate check. What is degenerate check? Means we have received check from someone, from any supplier, towards security deposit, for example. We have deposited that check into our bank account. Okay, our banker has sent that check for collection. Means our bank has tried to collect that exact amount from the account of that supplier, but due to insufficient bank balance of the supplier, our banker may not be in a position to collect the check or to collect the amount. So in that case, this is that will be known as the check is degenerate. Means we don't get any payment against that check. So that is the degenerate of the check. Non-detection of the stale check. What is stale check? The validity of the check presently, the validity of the check is 3 months. If you are issuing any check, up to 3 months period of the time from the date of issue of the check, it is valid. Means it can be paid. If the date is more than 3 months, the check cannot be honored by the bank. Means no payment can be made by the bank against that check. So that check is known as stale check. Means again, if the validity is more than 3 months,
nothing can be paid by the banker. Okay, so in that case, again we have to issue fresh check. Then wrong debit, if a bank might have debited certain amount. If you do not prepare BRS, we will not be in a position to detect what are the debits what are the various debit entries made by the bank. If we prepare the BRS, we can know the debit entries and we can see what is the entry. If we are convinced, okay, we'll take this entry in our cash book. If we are not convinced, if it is not as per provisions or not as per the actual, so we may approach the banks and this is what are the debit made by the bank is not correct. You please revert this. You please give the credit. So it may so happen there may be wrong debit, there may be wrong credit. So again, the fraud or embezzlement of the cash can be detected by preparing BRS. So again, these are theoretical as I discussed. These things I told you, the process of preparing the BRS, identify the difference between cash book and bank statement. Identify the difference. How you identify? You just match all the entries. Each and every entry of the cash book has to be matched with each and every entry of the bank statement. If some entries are not matching, then you have to identify those entries and identify, then accordingly you can prepare the BRS. You see one problem. Okay. We'll try again I have discussed the theoretical related to the problem. Now you try to understand, you can understand. But this one easy way of preparing, I am just showing you, you please adapt this also. What is that easy way? You just see, you can consider your right hand as cash book, right hand as cash book, your left hand as passbook. Every time you consider. While even if while sitting, while preparing for exam or while practicing at home or maybe writing exam paper, you can think this also. Your right hand is the cash book. Again, how to remember it is a cash book? You can think as we are writing this hand, you can assume that right hand is cash book, left hand is passbook. Just you assume. Any point of time, if everything is fine, this balance will tally. This equal. This will be equal. Your cash book balance, passbook balance, like same. Equal. This. Okay. This is again. I am repeating. Right hand is cash book. This is passbook. Okay. First question is given. Bank balance as per passbook. Okay. Up to 30th June it is given. Bank balance as per passbook is given. Passbook means our left hand. Our left hand. Okay. You see in the question, bank balance as per passbook is given. Passbook is given means whatever addition or deletion or adjustment you have to make with the passbook only. Do not touch the cash book here. Do not touch the cash book. Why? Because bank balance as per passbook is given. We'll have to find the balance as per cash book. So that is why whatever you have to add or deduct, you can do only from passbook, only from your left hand. Okay. Up to this, at the beginning of the question, my left hand and right hand all are equal. Same. Balance, same in the sense, cash book balance does tally with the balance of the passbook. It's equal. Okay. Balance of the passbook is 14,000. Okay. It is given 14,000. You see the second entry. Two checks of rupees 8,900 and 10,700 were issued on 25th June 2019, out of which only one check of rupees 8,900 was presented for payment before 30th June. Two checks were issued. You have issued two checks. Let's again. Back again. Back. पीछे again. बस wait. Two checks of rupees 8,900 and 10,000. Now you are allowed to speak. I have allowed you all. Don't make disturbance. Wherever you can also continue. Two checks we have issued on 25th June. Issued means we have written in our cash book, mind it. When we have issued the check means we have written in the payment side of our cash book. We have written it. Out of which only one check of 8,900
were presented for payment before 30th June. Means one check was presented and payment was made before 30th June. If it is presented and payment was made, then it's fine. That means there is no difference. Okay, we have issued the check has been presented and it has been paid. So there is no confusion. We have issued the check of 8,900. 8,900 has been presented for payment and it has been paid also before 30th June. So there is no need to prepare this on BRS. So there is, though it is given in the question, 8,900 is not to be treated. Either it is not to be added or deducted anywhere. You see 10,700. What it has happened? Now we have issued check of 10,700. While we have issued the check, so issued means our cash book. Our cash book balance has been reduced when you have issued check cash book कम हो गया. अब हम issue करेंगे ना, we'll write in the cash book. So our cash book balance will reduce. You see, I have shown you. This is my cash book passbook. Whenever I issue check of 10,700, certainly our cash book will be like this only. Passbook is right, left side. You see, my left side is passbook, right side is cash book. So whenever I have issued 10,700, the position is like this. Now, what is to be done to make it equal, and whatever it should be done with the passbook only. No, you do not add anything to the cash book. Why? Now you have given balance. अगर आप पासबुक बैलेंस आपको दिया गया क्वेश्चन में, इसीलिए आपको अगर ऐड करना है और लेस करना है, आपको पासबुक का साथ करना है. तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप क्या करने से वो इक्वल होगा? पासबुक बैलेंस से आपको क्या करने से वो इक्वल होगा? ये पासबुक बैलेंस से अगर आप लेस करेंगे वो इक्वल होगा. दिस इज ये लेस. पासबुक बैलेंस में अगर लेस करेंगे वो इक्वल होगा. दैट मींस फर्स्ट एंट्री होगा लेस check issue but not presented for payment. The particulars will be written like this: less check issued but not presented for payment. Amount is 10,700 because there is a difference of 10,700 only. You come to the second entry, reverse of this only. Second, check of rupees 16,400 were deposited. Checks, maybe multiple checks. Checks of 16,400 were deposited, but only one check of 6,400 was cleared by bank on 20th June. Means as we are preparing it up to 30th June, so whatever transaction has to be done by the bank up to 30th June. That means we have deposited check of 16,400. Whenever we will be depositing the check, this is our cash book again, right side. So whenever we will be depositing means we'll have to write in our receipt side of the cash book. Receipt side means your balance will be increased. Cash balance will be increased. Means your balance will be like this. Like this. So you have recorded entry of receipt of 16,400, but only one check of 6,400 were cleared by the bank. Bank cleared only one check. Means the balance check of 10,000 was not clear. Means there is a discrepancy of, there is a difference of rupees 10,000 between the cash book and passbook. And it will be reflecting like this only. Okay, whenever we will be depositing means cash book will be more, passbook will be less. There is a 10,000 difference. Then what is to be done with the passbook? To make it equal, you have to add it with the passbook, because like this it is there and you have to do it passbook only. So it has to be added with the passbook. Then only it can equal. That means here the entry will be written like this: add check deposited but not credited by the bank. Check deposited but not credited by the bank, 10,000, because there is a difference of 10,000. Okay. Then next, cash of 5,500 withdrawn from the bank for personal use. You have withdrawn 5,500 for your personal use, but not recorded in the cash book. Means you have withdrawn from the bank directly. You have withdrawn. You have not recorded in the cash book. But whenever you withdraw the money from the bank, means
your passbook balance will be reduced. Certainly. You see again, this is the balance, equal balance. Achha. When 5,500 has been withdrawn from the bank means passbook balance will be reduced. Your position of the hand will be like this only. Your passbook balance will be reduced. As you have not entered this in the cash book will be at a higher side. Then whatever you have to do, again with the passbook only, that means it has to be added. If it will be added, it can match. So that means here add check withdrawn from the bank, but no entry in the cash book, not recorded in the cash book. Yeah, withdrawal of rupees 5,500 from the bank, but no entry, no record in the cash book. You can write. The next, bank institutional charges of 350 debited to Messrs ABC account is not recorded in the cash book. Bank has deducted 350. When bank will deduct means bank can bank can do it in the passbook only, not in the cash book. Cash book is our property. Whatever transaction we will do, we will make it in the cash book. But whatever transaction will be done by the bank, that should be reflected in the passbook. When bank charges has been debited means less, credited means more. When debited less, credited more in the bank statement. In the office, you can verify your statement. If something is credited, is written in the cash book, in the bank statement, if it is written credit, that will be more. The amount has been credited means your balance will be more. Debited means your balance will be less with that amount. Okay. Bank charges of 350 debited but not recorded in the cash book. Again, it is equal, not recorded in the cash book, but bank charges debited by the bank. Debited by bank means passbook will be reduced like this. Passbook will be reduced. Again, what you have to do with the passbook to make it equal? You have to add it. Add it in the passbook. Add bank charges debited by the bank but not recorded in the cash book. You have to write add bank charges debited by the bank but not recorded in the cash book, 350. Then next, there was a debit in the passbook of rupees. You see, debit means less. There was a debit in the passbook of rupees 7,500 in respect of a check dishonored on 30th June. Means we have deposited a check. When we will be depositing the check, certainly we will make the entry in our receipt side of the cash book. Our cash book balance will be more. But that check has been dishonored. Dishonored means, again, that supplier may not be having sufficient account in his bank account. That is why the bankers is not in a position to collect 7,500 against that check. You see, what is the position again? Equal. Then, whenever the check of 7,500 dishonored means a passbook balance will be reduced like this. Passbook will be reduced. You have deposited the check means we have entered in the cash book. Cash book balance is more, but passbook, as the amount is not collected, it is more less amount passbook. Then you have to add this. Add check deposited but dishonored. Yeah, check deposited but not collected by the bank, 7,500. The last entry is interest of rupees 425 as credited in the passbook. Credit means more. In interest of 425 as credited in passbook only. Why only is written? Now only is written means it is no entry in the cash book. Only it is credited in the passbook. If interest credited in the passbook means your passbook will be more like this. So what you have to do to make it equal with the cash book? You have to deduct it from the passbook. So less interest credited by the bank but not recorded in the cash book. 425. So whatever addition, deletion I have told you, if you do it with 14,000, whatever balance you will be getting, that balance is balance as per cash book. You have given bank balance as per passbook, means your balance as per bank statement is given, and by your total last figure will be balance as per cash book, your book. So this is the question, and you do the next. This is the answer. That all I have
discussed with you. Okay, so this I have shared this question. I have shared to you. Some of you also have solved this. Maybe commerce student, yeah, maybe also some other one to non-commerce student also. They have also maybe by thing. Maybe from their end they have thinking it. They are clear. They have also solved the problem. Okay, this is one problem. So we'll discuss one more problem also, whatever I have shared to you. This is, it is bank balance as per cash book. You see, their passbook balance was given. It is balance as per cash book, means right hand side. And we will have to find it the balance as per passbook. Cash book balance is given. We'll have to find it the balance as per passbook. You just think yourself and take your right hand as cash book, left hand as passbook. Now it is equal. Now it is equal. The first entry says check of 6,350 deposited into bank, but not yet collected by the bank. Again, as I told you, whenever you will be depositing the check, first you will be making entry in the cash book, in the receipt side of the cash book. Means your cash book balance will be more. Cash book balance will be more and passbook balance will be less as it is not collected by the bank. So means again it is cash book, it is passbook, like this. Right hand side is cash book. Here, whatever I will do, I will be doing with the cash book only. Why? The balance as per cash book is given. Balance as per cash book is given. Whatever addition, deletion I will have to make, I will make it with the cash book only. This is the position. Check you have deposited, means something more, like this happened. So what you have to do to make it equal? And again you have to do it cash book only. You have to less it. Like it was there, you have to less it. So that is why you have to write less check deposited but not credited by the bank, 6,350. Then next, bank paid electricity bill of rupees 9,700, which was not recorded in the cash book. Means directly, maybe there may be we may have some agreement with the bank. You please pay my electricity bill directly. So it has happened like that. So our banker has paid the electricity bill. We do not have any idea on this on that day. Yeah, up to 30th, up to 31st March, we do not have any idea. So that we do not have also recorded in the cash book. So when this is the again position, cash book balance is given. When bank paid electricity charges means our passbook balance reduced, like this. It happened. So again, what we have to do with the cash book to make it equal? This again, cash book balance has to be reduced. So less electricity payment of rupees 9,700. Yeah, less payment of electricity paid directly by bank, but no entry in the cash book. You can write. The next, check issued to supplier of rupees 15,100 was not presented for payment up to 31st March. Same thing. Check you have issued means again this balance. Check issued means less. Cash book less. You have issued, but it is not presented for payment. It has not been collected by the bank. The amount has not been credited into our passbook account. In that case, what like this is the situation. Check you have issued means you have paid something. Check issue means you have paid to someone. Your cash book balance will be reduced. Then what you have to do with the cash book only to make it equal? You have to add it. Okay. Then interest on investment of 8,800 was collected by the bank, but was not recorded in the cash book. Means interest was directly collected by the bank. This is the situation. When interest was collected means our passbook balance has become more. Like this has happened. Passbook balance has become more. And again, cash book balance is given, and what we have to do with the cash book only? What we have to do to make it equal? We have to add it. Add interest credited by the bank, but not recorded in the cash book. Then bank charges of 650 was debited in the passbook. Bank charges. Again, the same bank charges debited in the passbook means
passbook balance reduced like this. Bank charges debited, passbook balance reduced. Then what we have to do with the cash book? We have to less it like this. Less bank charges debited but not recorded in the cash book. And the debtor of Mrs. XYZ directly deposited 12,000 into bank account on 28 March, which was not entered in the cash book. One of the supplier or debtor has directly deposited into our bank account. He has directly deposited. Means this is the situation when he has directly deposited certain money, means our passbook balance has become more like this. Again, what we have to do with the cash book to make it equal? We have to add it like this. So add amount directly deposited by the debtor but not entered in the cash book, 12,000. So likewise, this problem also solved. Okay, so this is the very easy way of doing BRS. I have discussed with you. I think after this you will be able to solve this. Again, in the question, it may come understatement, overstatement. That one word is there. Understatement of the cash book or passbook or overstatement of the passbook. Overstatement means it has increased, balance has been increased. Understatement means balance has been decreased. It is a terminology, it may come. So that is why. So understatement means balance has been decreased. Overstatement means it has been increased. So degenerate means I have told you, you have deposited the check has been sent by the bank for collection, but due to insufficient amount or maybe something, no signature on the check, maybe invalid check like that, so it may be degenerate like this. Okay, so now we'll discuss. Please tell something. Any doubt? Anyone having any doubt? You can tell. सर नमस्कार सर। वीडियो ऑन कीजिए, बोलिए। सर पासबुक जो है ना उसमें दिक्कत आती है थोड़ी सी, जब पासबुक में करते हैं ना जब स्टार्टिंग मतलब पासबुक से होती है उसमें दिक्कत आती है थोड़ी सी ना। बोलिए नहीं, बोलिए क्या दिक्कत आती है, बोलिए। मतलब जज नहीं कर पाते कि अमाउंट का प्लस माइनस का, उसमें जजमेंट मतलब गड़बड़ा जाती है, जबकि कैश बुक वाला तो कर लेते हैं। ऐसे बोलने से नहीं होगा मैडम। मैं तो आपको क्लैरिफाई कर दूंगा क्या दिक्कत, मुझे डायरेक्टली बोलिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है पासबुक में। यही तो बताया, बैंक डायरेक्टली कुछ ट्रांजैक्शन करता है, बैंक डायरेक्टली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। जैसे कुछ अमाउंट डेबिट करता है, हमारे अकाउंट से काट देता है, और कुछ अमाउंट आप ना एग्जाम पॉइंट से सोचिए, आपका इंस्टीट्यूट का बीआरएस मत सोचिए, एग्जाम पॉइंट का सोचिए। तो आपका स्टेटमेंट में कुछ ऐसे डायरेक्टली एंट्री होता है, डेबिट एंट्री, कुछ पेमेंट होता है जो आपको इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो केस में आप क्या करेंगे, बैंक को लिखेंगे ना कि ये जो ए डेट में ये जो अमाउंट आप डिडक्ट किए वो क्या है अमाउंट, उसका डिटेल बताइए है क्या। वो जब डिटेल देंगे फिर आप वेरीफाई करेंगे ना, हाँ इट इज टू बी पेड, ये पेमेंट होना था, ठीक हुआ, या ये पेमेंट नहीं होना था। और अगर वो आपका रिलेटेड अमाउंट नहीं है, अगर पेमेंट हो गया तो फिर बैंक को लिखिए, बैंक उसको रिवर्स करेगा। सिमिलरली अगर कुछ क्रेडिट आ गया बैंक में डायरेक्टली, कुछ क्रेडिट है, इसीलिए तो रिकंसिलेशन आपको दिक्कत है बोल के ना हम बीआरएस बनाएंगे। अगर दिक्कत नहीं होगा तो मैडम देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर फॉर बीआरएस। ओके, प्रॉब्लम तो है, अगर प्रॉब्लम है इसीलिए हम बीआरएस बना रहे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है हमारा साथ। तो हाँ आप ठीक बोले कि जो प्रॉब्लम होता है पासबुक में ज्यादा होता है। क्यों, डायरेक्टली बैंक कुछ करता है, तो वो केस में आपको जब तक ओनली उतना नहीं, आप सोचिए आपका इंस्टीट्यूट में बहुत लोग डिपॉजिट कर देते हैं पैसा, बहुत कुछ, कहीं जैसे आप लोग जैसे कोर्स भी डिपॉजिट करते रहे, मैं आपको 1000 बार मांगते रहा, सर ये किसका है बताए बताए बताए, क्यों पूछते रहा, ये बीआरएस को क्लियर करने के लिए। क्यों, जब आप डिपॉजिट तो कर दिए 1000, मुझे जब तक पता नहीं चलता है कि 1000 किसका है, मैं कैशबुक में लिख नहीं पा रहा हूं, तो मुझे भी कंफर्म होना है ये पैसा किसका है। जो मोमेंट में मैं कंफर्म हो जाऊंगा ये पैसा हाँ मैडम का पैसा है, तो मैं फिर आपका नाम का साथ लिख दूंगा, यू आर पेड कोर्स फी ऑफ ₹1000। लेकिन जब तक मुझे पता नहीं है तब तक मेरा आउटस्टैंडिंग हो रहेगा,
मैं तब तक बार बार आपको पूछता रहता हूँ, बार बार बैंक को भी पूछता रहता हूँ। आपको तो कुछ काम उसमें करना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसीलिए तो बीआरएस भी है। बीआरएस इसीलिए बनता है कि देयर इज ए डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द कैश बुक बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। तो क्या डिफरेंस है उसको पहले आप सॉर्ट आउट करो। कितना 10 आइटम है या 50 आइटम है। जैसे हेडक्वार्टर का आप ले लीजिए कैश बुक, उसमें हजारों का, एक मंथ का 1000 का डिफरेंस आएगा। पता नहीं कौन कहाँ डिपॉजिट करते हैं, क्या करते हैं। मीन्स 1000 एंट्री होगा कोई बड़ा इंस्टीट्यूट का, उसमें एक 1 मंथ में कम से कम 100 एंट्रीज होगा। जैसे पता नहीं कहाँ आ गया, कौन डिपॉजिट कर दिया या कैसे डायरेक्टली पेमेंट हो गया, वो तो होगा। बट वी आर देयर आल्सो टू प्रिपेयर बीआरएस टू फाइंड इट आउट द प्रॉब्लम। ओके, टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय लुकिंग एट द प्रॉब्लम। ओके, ओके सर, थैंक यू। बोलिए और कुछ। मैं चाहता हूं आपको बीआरएस, आप ये सेशन का बाद आपको बोलना चाहिए ना मेरा तो हो जाएगा बीआरएस। अगर आप जब तक नहीं बोलेंगे मेरा नहीं होगा तो फिर मेरा सेशन शाम तक चलेगा। आप बैठिए, हो जाएगा आपके सर, हो पेन जाएगा, लेके बैठिए, मैं भी यहाँ हूँ। 5 बजे तक हो जाएगा बैठिए। सर, हाँ, हो जाएगा सर। एनीवन? हाँ जी बोलिए, क्लियर नहीं हो रहा है? और कुछ संदीप और कुछ? हेलो सर सर। बीआरएस कर पाएंगे सर? थोड़ा थैंक थोड़ा यू लाउडली बोलिए। नो सर। प्रॉब्लम बीआरएस सर। कर पाएंगे सर? हाँ नो जी प्रॉब्लम सर। Sir, good afternoon, sir. This is Anita from Bangalore, sir. या Sir, in your questions after assignment, there was an entry called bank bill discount dishonored by bank. That point I couldn't. बैंक Bank bill discounted by bank, but dishonored. One entry was there, sir. Yeah. Discounted by bank means some charges. Okay, some charges they Yes, have sir. deducted. In your question, Okay. but You listen. dishonored on later date, one adjustment. Okay. You submit. We'll see it. So how to No treat that, problem. sir? Mm. That is okay. Question is there means that is some but a difficult question was there. But for your question, your examination point of view, difficult question will come. Very fundamental question will come. If it comes, very fundamental question will come. Okay. Okay. Oh, okay, sir. Thank you, sir. Anyone? Chat box something. Hello sir, I'm Rizwan from CFT. Yeah. How to deal with the LC letter of credit with the open letter of credit when it comes to bank reconciliation? No. Letter of credit. What you do generally? Letter of credit. While executing any letter of credit, we will have to issue a check first of all. Okay. Initially, we will have to issue a check. Towards again that check will be invested in the short-term deposit. Okay. So against that, LC will be established. One letter of credit will be established. Means against our check, one letter of credit will be established. Okay. Then what will happen? Whatever debit or credit means whatever payment bank will make against that letter of credit, they will directly deduct debit from our account. Directly debit. But in that way, we'll have to identify that and we have to obtain advice from the bank also. We'll have to obtain advice. Okay. Whatever debit bank has made against the letter of credit, or maybe some interest might have been credited by the bank also. Whatever bank will do in our bank statement or bank account, we'll have to obtain bank advice or a letter from the bank. Then only we will be in a position to prepare the BRS. Unless and until it is known to us, what is that? What is this amount? So we will not be in a position to prepare the BRS. So letter of credit means while preparing letter of credit, we will have to issue one check only. Okay. Again the check, LC will be established. Letter of credit will be established. After supply of the material, installation and working of that material, that equipment, the banker will make payment against that LC. Whenever banker will make, bank is not informing us, but we will buy after seeing the bank statement,
we will be able to know these are the amount have been debited by the bank. So we will approach to the bank for issuing the bank advice. On the basis of that advice, we will make in the cash book entry. Means if the bank has made payment something, then on the basis of that advice, we will also make entry in our payment side of the cash book. Okay. Yeah, if interest is credited against the short-term deposit, established again related to LC, again we have to make entry in the credit side of the cash book. Thank you. Closing balance in the BRS na every time closing balance of the cash book, closing balance of the cash book, closing balance of the bank statement. Okay. Cash book balance, passbook. CB means cash book balance. PB means passbook balance. Short. Cash book, passbook. There may be a situation bank overdraft. Balance passbook as per bank overdraft. Bank overdraft means negative balance, minus balance. If passbook is written like this, in the question it may come like this. If passbook shows a overdraft of rupees 15,000, overdraft means bank is not having positive balance, negative balance means it may so happen. So it is a question only. Situation may come. So overdraft means negative balance. Instead of positive balance of 10,000, bank means we might have withdrawn more money. We might have utilized more money than our available balance. It may so happen. Then anything clear? सर आपके क्वेश्चन में ना वर्ड लिखा था ओवरकास्ट. ओवरकास्ट. हाँ जी, ओवरकास्ट, CAST. तो उसका क्या मतलब है सर? वही अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग में बताया ना आपका, मोर एनहांस. ओवरकास्ट में ज्यादा हो गया. अंडरकास्ट मीन्स कम, ओवरकास्ट मीन्स ज्यादा. ओके सर. ओवरकास्ट ज्यादा, अंडरकास्ट कम. सर दैट मीन्स जो एंट्री था ना, मतलब वो जो उसमें लिखा था पासबुक क्रेडिट साइड वाज ओवरकास्ट ₹2000, मतलब क्रेडिट 2000 रुपए ज्यादा हुआ. हाँ, 2 ज्यादा हुआ. ओके सर. नहीं, अभी तो ये सेशन हो गया. तो अब जो मैं क्वेश्चन शेयर किया हूं ना आपको, वो सारे क्वेश्चन में आप लोग प्रिपेयर करके मुझे भेजो. थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना ऐसा जैसे सिंपल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है. थोड़ा आप सोच के कीजिए, भेजिए मुझे व्हाट्सएप पे, नो प्रॉब्लम. मैं तो आपका आंसर शेयर कर दूंगा. आंसर सबको शेयर कर देंगे, सारे आंसर शेयर कर देंगे. ओके, आप सोचिए, हो जाएगा. ऐसे देखने से ये फंडामेंटल, ऐसे बहुत वेरी डिफिकल्ट तो नहीं है. अगर आप भाई यू ऑल आर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क 5 year 10 year like that, so I don't think it is a very difficult thing, easy thing only. कैश बुक में क्या एंट्री है, स्टेटमेंट में नहीं है, बट इट इज बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक. थोड़ा सोचना है बस, दैट्स ऑल. ओके, यू कैन डू. I understand, I feel, I'm sure you can do. Okay, then we'll discuss on DM2. The same slide to share. I'm sharing that same slide, last portion. Last up, next. You see, this is how I have chosen this. Actually, I think some technical issue is there calculating DA. So most of the people I have seen, it is my experience, most of the people are making mistake in calculating the DA rate. Okay, so that we'll discuss how it is calculated. Okay, as per our latest rate, if absence from headquarters is less than 6 hours, DA is admissible at the rate of 30%. And if absence from headquarters is between 6 to 12 hours, it is 70%, not 100. It is 70%. Okay. If absence from headquarters is 6 to 12 hours, it is 70%. The middle one is 70. And if absence from headquarters is more than 12 hours, it is 100%. So DA is calculated on this way only.
Question come again, how it is calculated. Okay, I am sure most of you, maybe 50% of you may not be knowing correctly, very correct way how to calculate DA. Okay, you should just remember, if absence from headquarters is less than 6 hours, DA is paid at the rate of 30%. If absence is between 6 to 12, 70%. If more than 12 hours, 100%. Come next slide. Then you see how it is calculated. First time you see, absence from headquarters will be recurrent from midnight to midnight and will be calculated on per day basis. This is very, very important point for calculating DA. It is calculated from midnight to midnight. Okay. For example, take example, Monday morning at 9 a.m. Okay. I will start from my institute, from NIASM Baramati. My flight is at 11 a.m. My flight is at 11 a.m. Okay, from Pune, I will be going to Nagpur. Okay, so Monday date is 13th. So how DA will be calculated in that case? And I will be reaching again Pune. I will be reaching, for example, Nagpur. I will be reaching at around 3 p.m. I will be staying there Nagpur for the 2-3 days. I will be staying. Again, I will be coming back here. Maybe after 3 days, I will be reaching here at 4 p.m. For example, I will be reaching here at 4 p.m. on 18th. In taking this scenario, how DA will be calculated? Okay, DA is calculated from midnight to midnight. Means when I will start my journey on Monday on 13th. I will start my journey on Monday on 13th. Okay. So on 13th, so what will be the DA rate? On 13th, DA will be calculated from 12 midnight. Okay, like that only. DA will be calculated from 12 midnight. You take otherwise, I will be reaching, I will make it more clear. I will be reaching here. I am coming from Nagpur on the reverse. I am telling. I am coming from Nagpur and I have reached here at Baramati 10 a.m. on 13th. Again, you tell on 13th, I will be reaching at Baramati at 10 a.m. on 13th. So can you tell for 13th, what will be the DA? On 13th. 70%. Yeah. 70%. It will be 70%, sir. DA will be 70%. How? Midnight 12 hours. 6 to 12. DA will be exactly 70% because on 13th, 10th, I have reached here in the morning. 10th. And it will be calculated from 12 midnight. From 12 midnight, 12 बजे से कैलकुलेट होगा. 12 तारीख को रात 12 बजे से डीए कैलकुलेट होगा. अगर मानिए मैं 13 तारीख को आके अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाऊंगा 4 बजे. 13 तारीख को 4 बजे पहुंच गया तो मेरा एब्सेंस हो जाएगा कितना? आप कोई डिस्टर्ब कर रहा है प्लीज. मैं सबको अनम्यूट किया हूं, डिस्टर्ब मत कीजिए. अगर मैं सुबह 4 बजे आके यहाँ पहुंच गया तो फिर डीए कैसे कैलकुलेट होगा? ना रात 12 से लेकर, रात 12 मीन्स प्रीसीडिंग डे का रात 12 से लेकर 4, सुबह 4 तक कितना आवर हुआ? 1, 2, 3, 4 लेस देन 6 आवर्स. तो मुझे डीए मिलेगा 30% वो केस में. यस और नो? अगर मैं पहुंचा 10-11 बजे मीन्स अप टू 12, रात 12 को मैं निकाला था, आया था. रात 12 को दिन 12 घंटा होता है. अगर 12 घंटे का अंदर मैं कभी भी आके पहुंचूंगा तो मुझे डीए मिलेगा 70%. अगर मैं 11:59 में पहुंचा या जस्ट 12 में पहुंचा, अगर मैं 12 पहुंचा मीन्स मेरा टूर प्रोग्राम में अगर ऐसा लिखा है कि मैं आई रीच बारामती 12 एग्जैक्टली 12,
तो मुझे 70% भी मिलेगा। यस और नो? 100% मिलेगा इफ इट इज मोर देन 12 hours. 12 आवर्स। 12 दैट मीन्स आपको आपका टूर प्रोग्राम में टाइमिंग अगर आप लिखे इट इज 12.01 पीएम में आप पहुंचे बारामती में 12.01, वो केस में आपको 1 डे मिलेगा। तो दिस इज द वेरी टेक्निकल वे ऑफ कैलकुलेशन। इफ यू नो दिस पॉइंट then it's there is no difficulty in calculation of the day. While going, while coming, in the in between there is no problem, and every time again it is calculated from midnight to midnight. Every time is calculated from midnight to midnight. From and it is the absence from headquarters. Again I am coming on Monday. Monday is 13th at 9 a.m. I am going to Nagpur. So that means from 9 a.m. it will be calculated. From 9 a.m. Monday 9 a.m. it will be calculated because it will be from absence from that. From Monday 9 to that Monday midnight, how it is? Monday 12, how many hours it is? It is more than 12 hours. तो इसलिए मुझे मिलेगा 1 day. हाँ जी मैडम बोलिए। अगर मैं 100% मिलेगा ना सर? हाँ जी कितना मिलेगा मैडम? 100% मिलेगा ना सर? 100% मिलेगा। 100% मिलेगा। 1 डे मिलेगा 100%। 1 डे फुल डे। अगर मैं रात को 8 बजे यहाँ से गया, जी सर, 8 बजे गया रात को मंडे को, तो मंडे का दिन का मेरा डीए होगा 8 बजे से लेकर रात 12 तक कितना है, जितना आवाज वो 3 घंटा का अंदर आ रहा है 30%। बस 30%। एग्जैक्टली। आपको ओनली डिफिकल्टी होगा कब? जिस दिन गवर्नमेंट सर्वेंट जा रहा है और जिस दिन वो रिटर्न आ रहा है, उसी दिन कैलकुलेशन आप ध्यान दीजिए। इन बिटवीन जितना दिन हल्ट किया फ्रॉम 12 मिडनाइट टू नेक्स्ट 12 मिडनाइट 1 होगा। आप बोलिए किसी के भी डाउट हो इसमें? एनीवन डाउट है तो बोलिए प्लीज। उसमें कुछ ऐसा सर ही होल्ड का बता दो एक बार। क्या अगर वो बीच में रुकता है तो जाकर पूरा नहीं, बीच का 100% तो रहेगा। बोलेंगे मैडम। पहले आप शुरू का खत्म का मुझे क्लियर होने दीजिए। बीच का तो बोलेंगे, बीच का तो बोलेंगे, नो प्रॉब्लम। पहले आप जब स्टार्ट किए, जिस दिन जो टाइम में आप स्टार्ट करेंगे, जो दिन, उसी दिन हाँ से जी। जब से स्टार्ट किए उसी दिन का रात 12 बजे तक आपका कितना हो रहा है आवर, तो डीए उतना ही होगा। आपका ठीक है एब्सेंस सर। हेडक्वार्टर कितना हुआ, डीए वो हिसाब से होगा। ओके, फिर जितना दिन आप हल करेंगे तो देन 3 दिन हल करेंगे। दैट मीन्स फ्रॉम जिस दिन फॉर एग्जांपल मैं मंडे पहुंच गया रात 9 बजे वहां पहुंच गया, तो मंडे मेरा ट्यूसडे का डीए कैसे कैलकुलेट होगा ना? मंडे 12 बजे रात को लेकर ट्यूसडे 12 बजे तक एक डीए होगा, वैसे ही होगा। रात 12 से रात 12 ही कैलकुलेट होगा। ओके, जो आप हट करेंगे, आप घूमिए, कहीं जाइए, क्या करिए। हाँ जी सर इस पे जैसे कोई अगर 1 PM पे निकलता है 13 को और 1 AM रात को ही वापस आ जाता है तो उसका सर कितना डीए अगर मिलेगा? आप 13 को 1 पीएम में निकलेंगे, 1 पीएम, तो आपका 12 घंटा नहीं हो रहा है, 1 AM को मोर वापस देन आना 12 चाहिए। आवर्स नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप रात 12 बजे तक आपका मोर देन 12 आवर्स नहीं हो रहा है, तो आपको 70% डीए मिलेगा 13। 70%। ओके, लेकिन सर वो रात को अगर रात को 2 बजे आ रहा है, 2 घंटे हो गए 12 बजे के बाद, वो काउंट हाँ नहीं होगा? रात को 2 बजे अगर आप आके पहुंच रहे, हाँ तो जी। फिर आप 12 बजे से रात 12 से 2 आपका ओनली 2 घंटा हो रहा है, तो आपका हाँ लेस जी। देन 3 आवर्स नो डीए मिलेगा। आपको डीए नहीं मिलेगा नहीं। ओके। अगर आपको रात को 2 में आके इंस्टीट्यूट में पहुंच गए वापस रिटर्न रात को 2 बजे मीन सुबह 2 बजे, जो भी बोले रात 2 बजे, तो हाँ 12 हाँ बजे से कैलकुलेट होता है। इसलिए 12 से 2 ओनली 2 घंटा है। 2 2 घंटा के लिए घंटे लेस देन 3 आवर्स नो डे। ओके। सर नो डे कैलकुलेशन ऐसा है, ऐसे ही वर्ड में कैलकुलेशन होता है, इसीलिए लोग गलती करते हैं इसमें। ओके, ओके सर। Hello, बाकी sir. हाँ जी Sir, I have a doubt. You said that if he reaches at 1 a.m. or 2 a.m., there's no DA. How is that? एवरी आप बोला था ना रात को 2 बजे आएंगे तो नो DA, वो 0.3 मिलेगा ना, 30% मिलेगा ना? नहीं, आप 12 बजे से कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो कितना आवर हो रहा है।
अगर इफ इट इज मोर देन 3 आवर्स तो आपको 30% मिलेगा ना, इफ इट इज लेस देन 3 आवर्स तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। लेस देन 3 आवर्स होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उसका प्रीवियस स्लाइड दिखा दो थोड़ा, प्रीवियस सर स्लाइड। अभी 6 आवर्स एक है मिनट, सर। एक मिनट, ये स्लाइड लेस देन 6 आवर्स, सॉरी लेस देन 6 आवर्स, अगर लेस देन 6 आवर्स है आपको 30% मिलेगा। ओके सर तो वो 2 इसमें 3 आवर का तो नहीं है ना सर? हाँ जी, 3 आवर का पॉइंट तो नहीं है सर, लेस देन थ्री नहीं आवर नहीं का है, तो नहीं नहीं है, नहीं है। कि हम 0.3 आई। 2 आवर के लिए सर 30% देंगे ना उसको? उसको कैसे भाई, वो अपना और अपना प्रोपोर्शनली कहाँ करेंगे आप भाई? नहीं आप सर, रूल जैसे मान, फिर आप एक बुक को लिख देंगे फिर क्या? नहीं सर, जैसे वो रात को सुबह चला था 1 बजे, नहीं दोपहर नहीं, में वो 10 छोड़ बजे तो दीजिए, हम अपना इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, जो प्रोविजन में है वो हिसाब से चलेंगे। इफ इट लेस इज देन, लेस देन 6 आवर्स 30%, अपना फिर उसको हम 30 का हाफ करके 15 देंगे क्या? वो और कुछ नहीं है। इफ इट इज absence is less than 6 hours 30, if it is 6 to 12 70, more than 12 100। ओके, और हम बट सर ऐसा कुछ नहीं माय करेंगे। माय क्वेश्चन इज आफ्टर 12 AM सुनिए टू सुनिए टू सुनिए, आपका अपना अपना हमारा अंदाज तो यहाँ नहीं लगाएंगे, उन्हें मिडनाइट को कैलकुलेट करेंगे। रात 12 से आप जो पहुंचे कितना आवर का हुआ, कितना घंटा। इफ लेस देन 6 आवर्स, लेस देन 6 आवर्स तो 30% मिलेगा, मीन्स आपका 1 आवर होने से भी मिलेगा, 2 आवर होने से भी मिलेगा ना। हाँ, तो फिर 100% हो गया ना सर, उसको आप कह रहे हैं नहीं मिलेगा, नहीं थर्टी नहीं नहीं परसेंट नहीं, नहीं मिलेगा? 30%, इफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर इज लेस देन 6 आवर्स 30% मिलेगा। हाँ, तो वहां तो फुल यहाँ डेली हो लिखा गया। है 30% तो फुल मिलेगा। तो फुल डेली हो गया ना सर, फिर उसका तो 70% प्लस 30%। फुल डे तो मोर देन 12 आवर्स होने से फुल डे। फुल डे मीन्स 1 डे। अभी डे जैसे मान लीजिए आपका ग्रेड में 1000 है पर डे, फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रेड में 1000 है, तो फुल डे मीन्स 1000 मिलेगा। 70% केस में 700 मिलेगा, 30% केस में 300 मिलेगा। यस सर। तो वैसे माय ही मिलेगा। क्वेश्चन सर, मेरा क्वेश्चन जो है ना सर, 1 बजे मैं गया सर और 3 बजे वापस आया सुबह। 1 बजे कितना बजे? 1 बजे मीन्स रात को, 1 बजे दिन में सर, दोपहर में एक दिन में बजे 1 एक पीएम तीन में बजे गए, 1 और पीएम में गए। रात को 3 बजे वापस आया सर मैं। हाँ, तो अगर 1 तो फिर कैलकुलेट आप करेंगे 1 पीएम टू रात 12 बजे कितना हो रहा है, तो उसका एक 70% कैलकुलेशन सर ये हो होगा। गया, हाँ 12 बजे तक सर 70% हो गया, हाँ ठीक है, और उसके बाद 30% फिर। हाँ ठीक है, वो हिसाब से मिलेगा, लेकिन कैलकुलेशन आपका दो रेट अलग अलग ऐसे दिखा के करना पड़ेगा हाँ, कि अलग अलग दिखाना पड़ेगा। हाँ 1 होगा 70, 1 होगा 30, अलग से करके 30। करना पड़ेगा। डेट्स ओके। डिफर ना सर? हाँ जी, वो उसमें डेट्स डिफर होता है ना सर, 0.7 0.3 ही देंगे। हाँ हाँ, वो 2 डेट का मिलेगा, 2 अलग अलग डेट हो गया, नहीं सर। 2 दिन हो सर गया, अलग दिन हो गया, 2 डेट। मुझे एक डाउट है सर, जो स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं ना सर, हाँ वो कैसे मतलब रेसिडेंस, अगर रेसिडेंस या ऑफिस से निकले वहां से करते डीए के लिए, या जो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन वहां से कैलकुलेट करते सर? नहीं, प्रोविजन हेडक्वार्टर में से तो हो लिखा तुम, है एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर से हो तुम, ये तो लिखा है यहाँ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर, मीन्स ऑफिस से जहाँ आपका, जहाँ से आप काम कर रहे हैं ना वहां से। सो जो ऑफिस से। हाँ किताब में जो हाँ। लिखा है मैडम प्रोविजन में, इट इज एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर। यस सर, यस। सर इसमें एक सर डाउट है सर। हाँ absence from headquarter is less than 6 hour 30%, हाँ, और सेकंड में सर लिखा है 6 आवर्स से 2 आवर्स के बीच में 100%। ना ना 100 नहीं, 70, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं उसको करेक्शन सेवेंटी करके आप परसेंट नहीं हाँ सुन सर, रहे। 70%, सॉरी सेवेंटी या परसेंट सर हाँ, अगर एग्जैक्ट 6 आवर होता है तो? वो लिखा है एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर इज बिटवीन, एग्जैक्ट 6 आवर होने से 70 में आएगा, क्योंकि पहले वाला लिखा है लेस देन 6 आवर्स, पहले वाला। अच्छा अच्छा, क्योंकि सेकंड वाले में 6 to 12 के बीच में लिखा है। या तो 70 आएगा। 70%, अच्छा तो हाँ 70% रहेगा 6 आवर्स या में। या या ओके ओके सर। Hello, sir. या I think the DA calculation starts from when the train starts from the railway station, right? DA calculation. that is okay. If you go on the TA rules na in the book, in the it is there, right, but absence from headquarter it is generally taken. Okay, Okay, thank you, sir. next slide.
Then DA for local journey, if you are performing in any local journey, DA will be given at the half the rate, 50% of the DA will be getting. Okay, means if your absence is 70%, sorry, if your absence is between 6 to 12 hours, that means you will be getting 50% of 70% of DA. Okay, if your absence is 6 to 12 hours, that means you will be getting D of 70%. In case of local, it will be half. Again, for enforced halt en route treated as duty. Enforced halt en route means आपको कहीं जाना है, कहीं और जाना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली जाना है, या सॉरी मुझे जाना है राजस्थान. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम पुणे टू राजस्थान जाना है, पुणे एयरपोर्ट टू राजस्थान. हियर फ्रॉम पुणे टू राजस्थान देयर इज नो डायरेक्ट फ्लाइट, नहीं है. तो मुझे पुणे टू दिल्ली, न्यू दिल्ली जाना पड़ेगा, न्यू दिल्ली टू राजस्थान जाना पड़ेगा. तो वो केस में मैं न्यू दिल्ली जाके फिर वहां बैठूंगा 5 आवर 6 आवर वट एवर इट मे बी, नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, कनेक्टिंग फ्लाइट जो भी होगा. तो वहां तो मैं बैठूंगा, लेकिन फिर आप बोल नहीं सकते वो जो बैठे हैं आपको मैं डीए नहीं दूंगा, क्योंकि वो जो हर्ट हो गया एनफोर्स्ड हर्ट, आपका रूट वही है. और इवन जो लोग ट्रेन में भी कवर करते हैं, ट्रेन में भी जाते हैं, ऐसा इंडिया एक वास्ट एरिया है, तो कहीं भी ऐसा होता है किसको 7 आवर 8 आवर भी कहीं हॉल्ट करना पड़ता है. वो केस में उसका डीए भी आपको देना पड़ेगा. ओके, देन ड्यू टू ब्रेकडाउन कम्युनिकेशन कॉज बाय फ्लड रेन एक्सेट्रा, अगर ब्रेकडाउन कहीं हो गया, फ्लड हो गया, रेन हो गया, वो केस में डीए भी आपको देना पड़ेगा. देन फुल डीए इज एडमिसिबल फॉर द फर्स्ट 180 days of the continuous halt at a station on tour, temporary transfer और training. ये केस में 180 days के अगर एब्सेंस है, फुल डीए आपको देना पड़ेगा. एंड अगर वो बियॉन्ड 180 days है तो डीए नो डीए देन, बट अप टू 180 days फुल डे. टू रेंट्स ऑन रिटर्न टू हेडक्वार्टर if a second journey commence on the same day on which an official returns from tour, each tour may be calculated separately, but the total DA for a day should be limited to 1. मीन्स वो बोल रहे हैं अगर सेम दिन में आप आके पहुंचे, फिर आपको अगर टूर में जाना है, आपको टूर में सेपरेटली सबमिट करना है, जो भी करना है, लेकिन उस दिन का तो डीए आपको टोटली एक ही मिलेगा. ऐसा नहीं यहाँ 70 ले लेंगे वहां भी 70 ले लेंगे, तो एक दिन में आपको 1.4 तो नहीं होगा. तो उसका बोलना है ये कि ऐसे दिखाने से आपको टीए बिल सेपरेट हो गया, एक दिन में आप 70% डीए, नेक्स्ट दिन में भी 70% डीए, तो ऐसा नहीं होगा. तो टोटल में 1 होगा, मैक्सिमम 1. नो डीए फॉर संडे एंड हॉलीडे अनलेस द एम्प्लॉय इज एक्चुअली ऑन कैंप. मींस कहीं आप जा रहे हैं टूर में जाके, फॉर एग्जांपल आपका कहीं होम टाउन है, वहां आप टूर में ऑफिशियल टूर में गए और जाके आपका सैटरडे संडे आपका घर में रुक गए, तो वो केस में आपको डीए नहीं मिलना चाहिए. हाँ, अगर आपको कहीं बाहर गए, आपका फ्लाइट है मंडे और आपका पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको रहना ही है, तो वो केस में आपको, अगर आपको रहना ही है तो वो केस में आपको डीए मिलेगा. नो डीए फॉर लीव आरएच अवेल व्हाइल ऑन टूर. अगर आप टूर में जा रहे हैं, टूर में अगर कुछ आप सीएल ले लिए या आरएच ले लिए, सीएल और आरएच अगर टूर में आप ले लिए, तो वो केस में आपको कुछ डीए मिलेगा नहीं. डीए जब कैलकुलेट करेंगे कुछ मिलेगा नहीं. तो ऐसे ही वे में डीए कैलकुलेट होता है सप्लीमेंट. तो इसमें कुछ डाउट, यही थोड़ा टेक्निकल इशू था, इससे मुझे लगा थोड़ा आपसे बात कर ले. क्लियर है सर? क्लियर? ओके, one more a small presentation regarding budget, very small, 10-15 minutes. Something is there I want to tell you, because only one more session is there, review session, only last session is there. So that is why I, whatever technical issue, something whatever I feel, yeah, whatever your request I am getting, so I will cover all those things. Last. Okay, one more presentation also I am just sharing. You please wait. सर या बोलिए. अगर कोई जैसे टूर पे गया हुआ है, उसको वहीं से इंटीमेट कर दे कि आपको अब यहाँ से आगे वहां जाना है टूर पे, हाँ जा सकते हैं क्या, तो वो कंटिन्यू रहेगा ना आपका सारा?
हाँ वो तो कंटिन्यू जैसा हो गया। अब तो हेडक्वार्टर आए नहीं ना मैडम, हाँ जी, हाँ जी। अब तो वहां से वहां चले गए, हेडक्वार्टर आप आए ही नहीं, तो आपका कंटिन्यू हो गया। अच्छा, बजट में, बजट का कुछ अगेन थोड़ा प्रैक्टिकल या फंडामेंटल चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलो नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बोलिए। सर क्या टूर पर ईएल वगैरह जो लाउडली लाउडली से लाउडली, जोड़ा जा सकता मैडम का आवाज इतना जोर से आ रहा है, आपका देखो कितना धीरे आ रहा है। सर टूर पे क्या ईएल ईएल लेना अलाउड है क्या सर, अर्ली वगैरह? क्या, मुझे कुछ सुनाई नहीं। हेलो जोर से बोलिए। सर वो बोल रहे हैं टूर टूर पर पर क्या अर्न ईएल लीव और अलाउड है सीएल सर, लेना अलाउ है। लीव? टूर पे ईएल ईएल लेना है, ईएल। नहीं, अगर आपका ईएल अप्रूव्ड है, अगर टू जनरली टूर में CLRS होता है, ईएल नहीं होता है जनरली। टूर को जब आप जा रहे हैं CLRS आप ले सकते हैं। अच्छा, CL एट ए टाइम आप कितना ले सकते हैं? CL एट ए टाइम 5। सर 5 हाँ, CL एट ए टाइम 5 ले सकते हैं। टूर का साथ ओनली CLRS होता है, ईएल नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ आपको ईएल में टूर ईएल कंबाइन है, अगर डायरेक्टर का अप्रूवल है, आपका कंपिटेंट अथॉरिटी का अगर अप्रूवल है, तो आपका ओनली वन साइड का फेयर मिलेगा। ओके सर। दोनों साइड का फेयर तो आपको नहीं मिलेगा। ओके। सर उस ईएल के दौरान सर डीए भी नहीं मिलेगा ना? हाँ, में नहीं मिलेगा। जी सर, ओके। अच्छा सुनिए, ये ना, ये BRE मीन्स एक फॉर्मेट है। जो लोग ऑडिट में काम करते होंगे आप लोग को पता होगा, अब बाकी लोग को जो नहीं पता होगा आप सुनिए क्या होता है, जनरली क्या होता है। एवरी ईयर, ये जैसे 2020, हिंदी में नो प्रॉब्लम आई थिंक आपको बोलने से। अभी सब हिंदी लोग, हाँ सर, हिंदी में बोलिए सर। हिंदी में अभी बोलिए सब लोग सर। कंफर्टेबल हो गए हिंदी सर इंग्लिश? बाइलिंगुअल प्लीज सर। हिंदी सर बाइलिंगुअल प्लीज। कुछ नहीं, कुछ नहीं, इंडिया सब हिंदी इंग्लिश सब समझ लेंगे आप लोग सुन सर के। बाइलिंगुअल प्लीज। ओके ओके ओके। आप देखिए ये है क्या है, ये दिस इज द आरी, BRE हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। इसमें तो क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो इसलिए वेरी वेरी सिंसियरली सीरियसली सुनिए। ओके, क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन आएगा उसमें। और एक सुनिए, और एक मेरा जो एक्रूअल अकाउंटिंग का बुक है, रिसर्च बुक ऑन एक्रूअल अकाउंटिंग, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है गैप, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट कन्वेंशन, उसका ऊपर दिया गया, उसको बिल्कुल वेरी केयरफुली पढ़िए, वेरी केयरफुली। उसमें क्वेश्चन मैक्सिमम चांस आ सकता है, मैक्सिमम चांस। ओके, वो बुक सबका पास है, आई होप मैं शेयर किया हूँ PDF। ओके, अच्छा, उसमें देखिए, ये जनरली वी हैव बजट on 3 parts. One is grant in aid capital, other one is grant in aid general, one more is grant in aid salary. We are getting budget from ICR or from Ministry of Finance under these 3 head. One is grant in aid capital, is used for purchase of plant, machinery, construction of building, road, all the assets, computer, furniture, like this. Grant in aid capital budgets are used for this. Okay. One more is grant in aid salary. Grant in aid salary is used only for payment of salary. You cannot utilize the unspent balance available under salary for other thing. You cannot. Salary budget has to be used only for salary purposes. Mind it, only for salary. Whatever unspent balance you will be having, it will be lapsed or you will be refunding. That is different issue. But salary, budget of salary will be utilized for salary only. Okay. You see here creation of capital assets only. This your granted capital. The budget under granted capital has to be utilized for purchase of assets only. Means this, if you are having any unspent balance out of these budgets, this cannot be utilized this for other purposes. Means the unspent balance of granted capital cannot be utilized towards other purposes. One more thing, you see
Under granting net capital, several heads are there. You see, one is land, building, information technology, library books, vehicles, livestock, furniture fixture, computer periphery. So many things are there. For example, you have given budget of 1 lakh. 1 lakh, and there are provision of, for example, in furniture, you can purchase 10,000. In library, in for IT, 20,000, like this. Breakup is there. Total is 1 lakh is given. But breakup of this head is also there. What I mean to say is that जो भी breakup दिया गया है, your actual expenditure may increase or decrease. Means अगर vehicle में 10,000 दिया गया, your expenditure may be 9,000 or maybe 11,000. It is permissible. But your total expenditure under capital head should not be more than the budget allocation. I am clear? Total allocation made for capital head. Total allocation might have made for different head. Furniture fixture, maybe some amount. Land, some amount. Building, some amount. Maybe. So your expenditure may exceed the provision, or your expenditure may also be less than the provision. But your total expenditure, overall expenditure should not be more than the budget allocation. Should not be more than 1 rupees in the budget allocation. If 1 lakh is given, you have to spend exactly 1 lakh or maybe less than that. But you cannot spend 1 rupees more than 1 lakh. I'm clear? And in between, though these heads, there may be less expenditure or more expenditure than the budgetary provision. In between the capital head, so many heads are there. 8-9 item heads are there. There also again budget provision will be there. Your income may be, your expenditure may be more than the budget, or somewhere may be less than the budget. But your overall expenditure under capital head should not be more than the budget allocation. Number 2, salary, granting net salary. This budget will be utilized only for salary purposes. On-spent balance, if available for salary, cannot be utilized for other purposes. Okay? Then you see, this is granting net general. Under granting net general, pension and retirement benefits is being paid. Pension expenditure is made from the budget of granting net general, not from the budget of granting net salary. Okay? There are under granting net general, so many subheads are there. One is pension and other retirement benefits. Second is TA. Third one is research and operational expenditure. Like this. This is administrative expenditure. Okay. Like these are the head. Here also some restriction is there. Means TA budget. TA budget can be utilized for TA purpose only. Any unspent balance, if, for example, TA budget of 1 lakh is given, you have an expenditure of 80,000 you have made, you are having unspent balance of 20,000. That 20,000 cannot be utilized for other purposes. Cannot be. TA budget, TA is for only TA purposes only. Okay. Again, you come to research and operational. Research and operational, this A and B, research and operational. Here, somewhere you may increase the expenditure, somewhere expenditure may be decrease or increase than the budget allocation, but the overall expenditure should be same within the budget. What I mean to say is that अगर रिसर्च एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में जितना भी बजट है, उसका भी रिसर्च का भी बजट होगा, ऑपरेशनल भी बजट होगा. एक्सपेंडिचर करने का टाइम में इट में शो अप इन दैट आपका एक्सपेंडिचर रिसर्च एक्सपेंडिचर रिसर्च बजट से थोड़ा ज्यादा हो गया, या ऑपरेशनल का एक्सपेंडिचर उसका बजट से थोड़ा कम हो गया, वो हो सकता है. लेकिन ओवरऑली जो टोटल जो होगा, टोटल दोनों का टोटल बजट से इंक्रीज नहीं होगा. विदिन दिस आप रीअप्रोप्रिएट कर सकते हैं. यू आर अलाउड. दिस इज कॉल्ड रीअप्रोप्रिएशन. मींस अगर आप रिसर्च में जितना भी बजट दिया गया, आपका एक्सपेंडिचर कुछ मोर हो सकता है, लेस हो सकता है. ऑपरेशनल भी जितना दिया गया मोर हो सकता है, लेस हो सकता है, लेकिन टोटल कभी बजट से
इंक्रीज नहीं होगा टोटल एक्सपेंडिचर। ये भी जितना हेड है सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल, जितना भी हेड है आपका विद इन द बजटरी एलोकेशन, विद इन वो सबका बजटरी एलोकेशन होता है सब हेड के लिए, कम्युनिकेशन में इतना, रिपेयर मेंटेनेंस में इतना, सबका होता है। ओके, उसमें इंटरनली आपका मोर और लेस हो सकता है, लेकिन टोटल में कभी बजट से ज्यादा नहीं होगा टोटल इन बिटवीन। इसमें जो पैसा बचेगा फॉर एग्जाम्पल ये लेके कहीं और खर्चा नहीं होगा, ये आप ये जो यहाँ जितना है इंफ्रास्ट्रक्चर टू अदर्स जितना लिखा गया है, ये जो भी बचेगा इतना ही अंदर यूटिलाइज होगा। ओके, रिसर्च ऑपरेशनल में जो भी बचेगा ये दोनों में यूटिलाइज होगा और कहीं और नहीं जाएगा, टीए ओनली टीए में यूटिलाइज होगा। और ये जो पार्ट है एचआरडी से लेकर ए तक ये भी सारा इसमें ही यूटिलाइज होगा, मतलब रीअप्रोप्रिएशन आप इतना ही अंदर आप कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही ये जनरली होता है। एंड कैपिटल का जो बजट, जो भी बजट टुवर्ड्स ग्रांटेड कैपिटल मिलता है, कैपिटल बजट कैन बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स ग्रांटेड कैपिटल ओनली या फॉर प्रोक्योरिंग कैपिटल आइटम्स ओनली। कैपिटल बजट मिल रहा है तो आपको ओनली कैपिटल पर्पस के लिए खर्चा करेंगे, सैलरी मिल रहा है तो ओनली सैलरी के लिए खर्चा करेंगे। सैलरी में जितना भी हेड आता है उसका सैलरी में क्या क्या सारा आता है, आपका सैलरी का जो भी पार्ट होता है प्लस सैलरी के अंदर में और क्या पोर्शन होता है, आपका मेडिकल बिल भी सैलरी का पार्ट हो जाता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी सैलरी का पार्ट हो जाता है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाता है। और आपका ये एलटीसी भी सैलरी का पार्ट हो जाता है, लीव एनकेसमेंट अगर कुछ लीव एनकेसमेंट ले रहे हैं एलटीसी में वो भी सैलरी का पार्ट हो जाता है। लेकिन अगर कुछ आप रीइंबर्समेंट ऑफ न्यूज़पेपर ले रहे हैं वो सैलरी का पार्ट नहीं है, वो कंटीजेंसी में जाता है, अदर्स में जाता है। ओके, तो ये हिसाब से और आपका जैसे जनरल का बजट, जनरल का पास ग्रांटेड जनरल कंटीजेंसी पर्पस में जो बजट आपको दिया गया उसमें अगर कुछ पैसा बच रहा है वो पैसा को लेकर सैलरी में यूटिलाइज नहीं कर सकते या कैपिटल में यूटिलाइज नहीं कर सकते। ओके, ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट है, जो करेंगे विद इन दिस उसका अंदर जो आप खेल सकते हैं उसे बाहर नहीं खेल सकते। ओके, उसमें जस्ट हेडिंग का अपन नजर दीजिए, मेन हेडिंग ये होता है कब जनरली जो बीआरई कैसे होता है, जैसे अभी जो चल रहा है 2023-24 अभी अगस्त इन द मंथ ऑफ सितंबर हम लोग आरी प्रिपेयर किए, आरी कब के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। ये जो कलम आप देख रहे हैं ना ये प्रपोज बजट आरी मीन्स ये कलम 9 कलम 9 आरी है। दैट मीन्स क्या है, इस साल जब शुरू हुआ हमको ऑलरेडी एलोकेशन बी ये कलम 6 एलोकेशन हमको दिया गया था, ऑलरेडी आईसीआर प्रोवाइड किया था एलोकेशन जब हम लोग को इस साल बजट दिया गया। ये एलोकेशन हम भी नेक्स्ट ईयर दिए थे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे प्रोसेस में होता है। अभी जब अप्रैल आया हमको बजट एलोकेट किया गया एंड दीज आर द हेड्स एंड वी हैव स्टार्टेड इनकरिंग एक्सपेंडिचर। ओके, देन सितंबर में आरई हम लोग सबमिट करते हैं, इसीलिए आप देखिए कलम 7 हियर इट इज रिटन एक्चुअल एक्सपेंडिचर टिल 31 अगस्त एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जब आरई आप प्रिपेयर करेंगे तो आप लिखेंगे ये कलम 6 गया बजट एस्टिमेट, देन कलम 7 हुआ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, देन कलम 8 होगा आपका एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर कितना है, जो आप सितंबर से लेकर 31 मार्च तक आप कितना ही एक्सपेंडिचर कर पाएंगे अंदर रियलिस्टिक मैनर, जितना आप एक्चुअली कर पाएंगे। ऐसा अननेसेसरी पैसा मांगने से तो काउंसिल दे देगा, but don't demand for money if you do not have any means liability or anything to any area or any indent for making expenditure। तो ऐसा जब एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर कीजिए, आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लस एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर टोटल हो जाएगा आरई रिवाइज एस्टिमेट। ये जो रिवाइज एस्टिमेट हुआ आपका जो बजट एस्टिमेट हुआ था जो बी आया था बिगिनिंग में, ये आरई स्टेज में वो ज्यादा हो सकता है। आपका बी अगर 100 रुपीज आपको मिला था आप आरई 120 मांग सकते हैं, या उसमें ऑफकोर्स रेस्ट्रिक्शन है, वो गाइडलाइंस है 10-20% आप हाइक कर सकते हैं, बट अगर आपका रियली रिक्वायरमेंट है आप ज्यादा भी आरई मांग सकते हैं। ओके, तो यहाँ आरई हो गया। अच्छा, उसमें देखिए एक कलम 11
ये कॉलम 11 में हम प्रपोज कर रहे हैं, प्रपोज बजट एस्टिमेट फॉर 2024-25 मींस नेक्स्ट ईयर के लिए हम सितंबर में बजट प्रपोज कर दिए नेक्स्ट ईयर के लिए। यहाँ सितंबर में ही बजट हम प्रपोज कर दिए, नेक्स्ट ईयर में हमारा बजट क्या होगा। तो जब मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल में ये जो बजट हम जो फिगर हम ही दिए हैं, ये फिगर काउंसिल हमको इंटीमेट कर देगा कि आपका बजट एस्टिमेट यही है। हाँ, ओनली थिंग इज दैट आप जब भी आरई करेंगे, जब भी बी करेंगे, आप एक ट्रेंड, आपका इंस्टीट्यूट में कितना एक्सपेंडिचर होता है, सैलरी में कितना एक्सपेंडिचर होता है, या कितना लोग ज्वाइन करेंगे, थोड़ा आपको पता होगा, कितना डीए ज्यादा से ज्यादा कितना इंक्रीज हो सकता है, थोड़ा आप एस्टिमेट रखेंगे आपका पास। एंड ये जितना सारे एक्सपेंडिचर होता है, ये सारे ये जो पर्टिकुलरली ईएफसी का अंदर होना चाहिए, पर्टिकुलरली कैपिटल हेड का एक्सपेंडिचर। इसमें देखिए कॉलम 5 पे लिखा गया एलोकेशन आजकल अप्रूव और ईएफसी, जो ईएफसी डॉक्यूमेंट होता है 3 साल का और 5 साल का, उसमें जो अप्रूवल होता है, वो अप्रूवल में जो होगा आपका ईयर वाइज एक्सपेंडिचर, 5 साल का एक्सपेंडिचर कभी भी ईएफसी से ज्यादा नहीं होगा, कभी भी। ईएफसी में जो एलोकेशन दिया गया है, you have to incur the expenditure within that allocation only. Okay, you cannot exceed the expenditure. Your expenditure cannot be more than the EFC amount because EFC is the approved one. Okay, so this is the expenditure part. Similar way also, again, this every institute we are getting budget for other than NEH, TSP, SCSP. Again, one is TSP. For TSP purposes also we are getting budget. For SCSP purposes also we are getting budget. For NEH purposes, NEH, North Eastern Hilly Region, for that purposes also we are getting budget. TSP, Tribal Subplan. NEH, North Eastern Hilly Region. SCSP, Schedule Caste Subplan. उसके लिए जो भी बजट आपको अगर किसी को मिल रहा है, आपको अलग अलग सब SCSP का अलग करना पड़ेगा, TSP का अलग करना पड़ेगा, NEH का अलग करना पड़ेगा। ऐसे करके आप चाहेंगे, ये आपका एक्सपेंडिचर का ऐसे ही बजट एस्टिमेट जनरली ऐसे करते हैं। एंड उसमें आपको कभी रेवेन्यू का भी थोड़ा पार्ट देना पड़ता है, रेवेन्यू पार्ट। इसीलिए देखिए ऐसे भी रेवेन्यू का हम लोग भी देते हैं बजट एस्टिमेट का टाइम में, कि आप रेवेन्यू रिसीव, आपका टारगेट क्या था 23-24 का, टारगेट जो भी था लास्ट ईयर का वो हमको पता है, आईसीआर सबको कम्युनिकेट किया है। एंड एक्चुअल कितना आप रियलाइज किए, आप कितना रेवेन्यू अभी तक किए अप टू 31 अगस्त, कितना एंटीसिपेटेड है, ऐसा करेंगे। और नेक्स्ट ईयर आप कितना कर पाएंगे वो कॉलम 8 में भी लिखेंगे। आप रेवेन्यू को भी फोरकास्ट आप करेंगे। ओके, एंड ऐसे जितने भी रेवेन्यू आपका पास है वो भी आप फोरकास्ट करेंगे। ओके, वो भी टीएसपी एसपीएसपी वो हिसाब से जाएगा। ये बजट थोड़ा मुझे बताना था आपको, कहीं क्वेश्चन ना मतलब आ जाए शायद इसमें, तो ये बोलिए अभी, एनी डाउट ऑन बजट? एनी डाउट? सर किस टाइप का क्वेश्चन इससे आ सकता है? थ्योरेटिकली कुछ भी आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि यानी वेदर आपका। सर ये तो नहीं आएगा ना, BERE बनाना तो नहीं आएगा? ना ना ना, वो नहीं आएगा। वो कैसे आएगा? वो तो एक्चुअल बेसिस में होता है, वो नहीं आएगा। ओके सर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ आप थोड़ा फंडामेंटली, मुझे लगा कि आपको थोड़ा शेयर करना है, पता नहीं कब आ जाएगा। सुनिए, आपका क्वेश्चन अगर कभी ऐसा भी आ जाएगा, मैं अगर वो टॉपिक कवर नहीं किया होगा, मुझे भी लगेगा खराब, अरे इतना मैं ये कवर नहीं, ये कैसे छूट गया, मुझे भी खराब लगेगा। तो इसलिए मुझे भी जो लगता है नहीं नहीं थोड़ा छूट गया मेरे से, तो मैं तो कवर कर लेता हूँ। ओके, कहीं बाद में मुझे भी गिल्टी फील ना हो, अरे ये इतना मैं कैसे कवर नहीं कर पाया इसको। तो रीजन है ये, मुझे भी नहीं पता फ्रैंकली स्पीकिंग क्या क्वेश्चन आएगा। ओके, प्रेजेंटेशन तो सर अच्छा है सर, समझ आ गया, लेकिन हम लिखें कैसे, क्या एक क्वेश्चन आ बार सकता मुझे है? कोई आप एट ए टाइम बोलने से कैसे होगा? ये प्रेजेंटेशन तो सर समझ आ गया, बहुत अच्छा था सर, लेकिन इसको हाँ? हम क्वेश्चन कोई आ गया तो उसको क्या लिखें, क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो आइडिया नहीं है सर इसके बारे में ना, क्या सर कुछ क्या आ नहीं, सकता है? आप मैं ऐसे ही समझाया, आप जो भी आने से आप लिख पाएंगे। ओके सर सर, इसमें थैंक यू। अप्रोप्रिएशन और रीअप्रोप्रिएशन का थोड़ा बता दीजिए। हाँ, रीअप्रोप्रिएशन यही है। सुनिए, एलोकेशन जो होता है आपका हेड वाइज एलोकेशन होता है, जैसे टीए में इतना, सैलरी में इतना, इसको एलोकेशन बोलते हैं। रीअप्रोप्रिएशन किसको बोलते हैं? रीअप्रोप्रिएशन
जैसे मैं आपको दिखाया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर का अंदर में फॉर एग्जाम्पल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, कम्युनिकेशन है, सो मेनी हेड्स है, 5-6 हेड है, और उसका भी बजट दिया गया। अप्रोप्रिएशन मींस एलोकेशन, उसमें भी एलोकेशन दिया गया है। मतलब काउंसिल में हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तभी हम लिखते हैं कि हमारा इस ये हेड में हम इतना कर पाएंगे खर्चा, 1 लाख कर पाएंगे, कोई और के हेड में 1.5 लाख कर पाएंगे, ऐसा करेंगे। अगर एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली उसका अंदर में होगा तो फिर वो ठीक है। अगर कोई हेड में हम इंक्रीज करेंगे, इसमें डिक्रीज करेंगे बजट से, उसको रीअप्रोप्रिएशन बोलते हैं। हाँ, लेकिन ओवरऑल, मैडम चुप रहिए, लेकिन ओवरऑली आपका बजट से एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं होगा। उसको रीअप्रोप्रिएशन विद इन दैट हेड हम कर सकते हैं। जैसे टीए का अनस्पेंड बैलेंस कहीं किसी और से रीअप्रोप्रिएट नहीं हो सकता है। रीअप्रोप्रिएशन टीए को हम कहीं और नहीं कर सकते। ओके, विद इन दैट हेड ओनली रीअप्रोप्रिएशन कैन बी डन। जैसे कैपिटल का बहुत सारे हेडिंग है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फार्म इम्प्लीमेंट, इक्विपमेंट्स, रोड, फर्नीचर, दीज आर द सो मेनी हेड्स। तो ये हेड का अंदर आप रीअप्रोप्रिएट कर सकते हैं। मींस ये हेड में भी बजट आप देते हैं। जब आप बी बनाते हैं, ये हेड में भी सारे बजट देते हैं कि मैं फर्नीचर में इतना कर पाऊंगा, कंप्यूटर में इतना कर पाऊंगा, वो होता है। लेकिन विद इन दैट हेड आप एक्सपेंडिचर का करने का टाइम में कहीं थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, कहीं थोड़ा कम कर सकते हैं, बट योर एक्सपेंडिचर आपका टोटल एलोकेशन से ज्यादा नहीं होगा, टोटल बजटरी प्रोविजन से ज्यादा नहीं होगा। अगेन 3 साल का एक्सपेंडिचर, 5 साल का एक्सपेंडिचर कभी भी ईएफसी से ज्यादा नहीं होगा। ईएफसी में भी सारे होता है, ये सारे कैपिटल कितना कर पाएंगे, एक्सपेंडिचर कितना कर पाएंगे, सारे ईएफसी में भी होता है। उसमें कभी आप ईएफसी में भी ज्यादा नहीं होता है। ओके सर, मिस अप्रोप्रिएशन क्या है? क्या क्या? मिस अप्रोप्रिएशन, रीअप्रोप्रिएशन, रीअप्रोप्रिएशन और मिस अप्रोप्रिएशन में मिस डिफरेंस क्या है? अप्रोप्रिएशन एक गलत, मिस अप्रोप्रिएशन मीन्स मिस यूटिलाइजेशन। आप गवर्नमेंट फंड को मिस अप्रोप्रिएट कर दिए, कहीं आप हेरा फेरी कर दिए, कहीं आपको पैसा कहीं और देना था, कहीं और चला गया गलती से, या वो इंटेंशनली आप कर दिए, वो मिस अप्रोप्रिएशन हो जाएगा। ओके Hello, sir. Can you just differentiate between this primary head of appropriation and secondary heads of appropriation? appropriation, Primary heads of primary unit of appropriation and the secondary unit of appropriation. No, that is the theoretically you might have discussed in the budget section, na? That is covered in the budget part only. Primary unit of no, that I will see. That I will see. Primary. This is whatever within the heads, whatever available. So that reappropriation can be made. Okay, within that broad head. That is So salary. Theoretical. I will see and share you. Okay. So salary is primary unit of appropriation, or salary? As I told you, salary cannot be reappropriated. Means that is primary. Okay. Salary cannot be reappropriated to others. TA cannot be reappropriated to others. Okay. Okay. These are the heads. Okay. And the secondary unit means what is inside the primary unit. Yeah. Okay. Hello, sir. Yeah. Is there any limit for reappropriation? Like percentage limit or something? Limit for? Is there any limit of percentage for reappropriation? No. Okay, sir. सर, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट और एडिशनल ग्रांट्स में क्या डिफरेंस? वो नहीं बोल सकते भाई, वो मैं आपको बताया, वो सारे थ्योरेटिकली ऑलरेडी कवर्ड है। वो भी कहाँ करेंगे उस सबसे, अभी उसको अगर कहीं मिलेगा मैं आपको शेयर करूंगा, वो सारे कवर्ड है। आप लोग तो उतना जब सेशन चलता है तब क्वेश्चन नहीं करेंगे कुछ, अभी मैं ओनली प्रैक्टिकल। फिर भी मैं आप ऐसा कर दीजिए, मुझे व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए क्या क्या सब थ्योरेटिकल पर, मैं आपको शेयर कर दूंगा, नो डाउट। टाइम है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, आपको क्या चाहिए करके दे देंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो एक्रूअल अकाउंटिंग का रिसर्च बुक मेरा था
उसमें आप सिलेबस का हिसाब से देखिए, सिलेबस में आपका जो है एग्जाम का सिलेबस में जो है वो बुक को आप कवर कीजिए, बिल्कुल कवर कीजिए फुल्ली, क्योंकि उसमें सारा चीज है। सिलेबस जो भी सिलेबस का हिसाब से उसको कवर कीजिए। ऑडिट मैनुअल को थोरली कवर कीजिए, बिल्कुल एवरीथिंग ऑडिट मैनुअल। ओके, एंड प्रॉब्लम तो आपको 2-3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो आपका जितना मैक्सिमम, जितना मुझे ट्राई करना था, जितना मुझे कवर करना था, मैं तो कर दिया मेरा हिसाब से। ओके, ओनली वन सेशन इज लेफ्ट, and that session I will be discussing on how to calculate pension and retirement benefits, gratuity, leave encashment, and that thing I will be discussing in that session. Well, that will be my last session. Last session for you also. After that, you can practice. If you are having any doubt, the group will be there. You can share. Yeah, if you share anything, any difficulty in your group, other people also may help. It is not that anything will be shared or anything, everything will be solved by me only. There are so many persons. You are also equally competent. Those who are working, those who know, those who are commerce background students, they also know how to solve the problem. Okay, so you for problem part, you just go on solving the problem, whatever you can. Okay, and I think up to this session, almost it is over, you can think. Up to this, you are fully prepared for the examination. Means whatever session we have covered during this initial session of 50 session and this review session, I do not think anything is left. I do not think anything is left. Again, it is not a competitive examination. It will be a qualifying examination only. Okay, so be confident, be strong, and spend time. आप प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसे थोड़ा कैजुअल वे में करने से नहीं होगा। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, अभी भी अगेन अप्रोक्सीमेटली 20-25 days times are there. So time is there. You just prepare. Okay. What is this? Share it. No. Share it. What share? Share it. What is this? Okay. So if nothing is there, so today's session we are closing, and one more session on 18th is there. So 18th, it may at 11 or may at 3, I will tell you. Yeah, maybe that will be the last session. So, and that session will be on this calculation of pensionary benefits, gratuity, CBP, that thing will be discussed only practical part. Okay. So, wish you all very, very happy and colorful Diwali. So, दिवाली अच्छा से मनाइए एंड दिवाली के बाद पढ़ाई भी कीजिए। ओके, सेम टू यू सर, हैप्पी दिवाली। ओके, हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी एंड कलरफुल दिवाली टू ऑल। सेफ दिवाली आल्सो। ओके, थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली। ओके, थैंक यू।